Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you are doing great. Let's start our social study lesson, chapter number 2, culture. Today we are going to discuss about Pakistani culture dresses. Yesterday we had discussed about Pakistani cultural languages. As you all know, a language is a very important part of our culture. So same like this हमारे जो culture dresses होते हैं वो हमारे इलाके की पहचान होते हैं. Let's talk about it. First we'll discuss about national dress. The clothes traditionally worn by people from a particular country, especially on special occasions or for formal ceremonies. हमारे जो national dresses होते हैं that is the indication which is usually associated with a geographical area or a period of time in history. It can also indicate social or religion status. So what is our national dress? Pakistani national dress is Shalwar Kameez. The Shalwar Kameez is national dress of Pakistan and is worn by men and women in all 5 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan in the country and in Azad Kashmir. So just take a short review of all these traditional dresses. Here we have Punjabi dress जिसमें कि हमारे पास एक पगड़ी यूज़ होती है and we have a लाचा. Now we have Sindhi dress. Sindhi dress में सबसे important चीज़ is अजरक और उसकी सिंधी टोपी. Now we have बलोची ड्रेस. बलोची ड्रेस में भी हमारे जो मेल हैं वो सर पे एक पगड़ी बांधते हैं and they are wearing the शलवार and कमीज़ also and the same woman भी जो है वो सर पे चादर बड़ी चादर ओढ़ के रखती हैं. And student, do you know that बलोची और सिंधी जो ख़वातीन हैं उनके कुर्तों में एक लॉन्ग पॉकेट होती हैं जिसे पोडो कहा जाता है. दिस इज़ द वेरी स्पेशल थिंग इन देयर ड्रेसेस. खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे मर्द हजरात हैं खैबर पख्तूनख्वा में दे आर वेयरिंग द वेस्ट कोट अलॉन्ग विद द पकोल विच इज़ कैप एंड अलॉन्ग विद शलवार कमीज़. एंड जो लेडीज़ हैं वो हमारी एक लॉन्ग फ्रॉक कैरी करती हैं एम्ब्रॉयडरी और उनकी ज्वेलरी भी कुछ ट्रेडिशनल होती है. नाउ वी हैव गिलगित बल्तिस्तान ड्रेस. गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो मर्द हजरात हैं दे आर वेयरिंग द कैप हैविंग अ फर विच इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ट्रेडिशनल ड्रेस. And here we have Kashmiri dress, a very beautiful Kashmiri dress, colorful and frock, embroidered frock and shalwar. And जो हमारे मर्द हजरात they are wearing the cap, embroidered cap and waistcoat. So ये हमारे मुल्क की speciality है. Basically lifestyle depicts the living standards of people and their surroundings. People has wearing different dresses which indicate their culture. Pakistan has total 5 provinces and all the provinces have different living style. They speak different languages, wear different dresses according to their culture and also the variety of food is there. So वो इलाके जो जहाँ पे मतलब शलवार कमीज़ नहीं पहने जाती हैं मतलब जैसे I'm talking about the cities. In the cities people also wear shirt and pants. In the rural areas people wear dhoti. People also wear waistcoat and sherwani. In the desert areas, women wear bangles also. हम सबको पता है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है. पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग इसे मुख्तलिफ़ अंदाज से पहनते हैं. शहरों में लोग शर्ट और पैंट्स यूज़ करते हैं. इसी तरह से हमारे जो रूरल एरियाज़ है देहाती इलाके हैं वहाँ पे जैसे पंजाबी कल्चर को अगर हम शो करें तो दे आर वेयरिंग द धोती लुंगी लाचा एंड अलॉन्ग विद द पगड़ी. सेम लाइक दिस हमारे जो KPK के लोग हैं वहाँ पे वो वेस्ट कोट पहनते हैं अलॉन्ग विद द कैप. सहराई इलाकों में ख़वातीन गरारा कमीज़ लंबी चादर और बाज़ों में बैंगल्स वेयर करती हैं. मैदानी इलाकों में मौसम की मुनासिबत से हल्के और गर्म कपड़े पहने जाते हैं. पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर गर्म और ऊनी कपड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं. और इसी तरह से हमारे जो ओकेजन्स होते हैं शादी ब्याह पे लोग ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं. सो हर इलाके के लिहाज से लोग अपने लिबास को तैयार करते हैं. So let's start to discuss about food.
ہماری لینگویج اور ڈریسز کے بعد we have different specialty in different areas about food. There are special dishes for every region of Pakistan in all parts of Pakistan. Different dishes are prepared from meat like chapli kebab, nihari and sabji. پاکستان کے ہر علاقے کے خاص پکوان ہیں, کچھ ڈشز ہیں, ان کی اپنی ورائٹی ہیں. پاکستان کے تمام علاقوں میں گوشت سے مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں, جیسے کہ کڑاہی گوشت, نہاری, سبجی, چپلی کباب اور پائے. People living in different areas use milk tea and coffee. In sweet dishes, people like kheer, halwa and zarda. اب اپنے علاقے کی مناسبت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ دودھ کی چائے بھی استعمال کرتے اور قہوہ بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یوزلی لوگ جو ہے وہ قہوہ استعمال کرتے ہیں, اور میٹھے میں اپنے پسند کے حساب سے لوگ فرنی, کھیر, سوئیاں, حلوہ اور زردہ استعمال کرتے ہیں. اوکے کلاس, سو ہیئر وی ہیو فیو فوڈ اور پاکستانی فوڈ. ہمارے پاس مکئی کی روٹی اور ساگ, پائے, بریانی وچ از ویری فیوریٹ آل اوور دا پاکستان. سو یہ ہمارے پاس وہ کھانے ہیں جو کہ پاکستان میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کے لیسن میں آپ کو ہمارے کلچر فوڈ اور کلچر ڈریسز کے بارے میں سب باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسائنمنٹ. سو ٹوڈیز اسائنمنٹ از ڈیفائن کلچر. ثقافت کی تعریف کریں. انٹریکشن, کسٹمز اینڈ وے آف لائف از کالڈ کلچر. ہمارے آپس کا میل جول, ہمارے رسم و رواج اور رہن سہن کا جو طریقہ ہے, دس از کالڈ دا کلچر. آئی ہوپ کلاس 4 یو آر کلیئر وتھ ٹوڈیز لیسن. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.